Good morning, you're watching the morning news show here on CNN News 18. I'm Sakshi Singh Litorian. In the next half an hour, I'll be bringing you all the latest news and developments from the nation and across the globe. And at the top of the bulletin, we are bringing you the long-standing debate over the implementation of Uniform Civil Code in India that continues to simmer. Now, after Prime Minister Narendra Modi batted for Uniform Civil Code on Tuesday, stating that there should be a Uniform Civil Code instead of the country being run by two laws. Now, Union Law Minister Arjun Singh Meghwal has said that there is no vendetta behind the UCC. Now, he addressed the struggles faced by the Pasmanda Muslim community as well, highlighting the hardships endured by Pasmanda Muslims. The Prime Minister emphasized that their lives have been made very, very difficult due to vote bank politics. कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। Now, CNN News 18 spoke to Pasmanda Muslims community about their welfare schemes after PM raised the issue yesterday. Let's listen in. मकान नहीं था हमारे पास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से हमको आवास मिला, मोदी जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा आवास योजना मिली है, इनका मैं गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से ये लाभ मिला है। मैं योगी मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद जी। आवास योजना में मिला था, मोदी जी का धन्यवाद है कि भाई वो आवास दिए तो घर बना है। आपको लगता है कि यूसीसी फीजिबल है इंडिया में? देखिए, वो तमाम चीज़ें जब बहस में आएगी, जब उस पर चर्चा होगी तो देखा जाएगा। जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका साथ देती है। अभी तक तो ऑफिशियली कुछ उन्होंने दिया नहीं है कि उनका क्या इरादा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से आज बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछा जा रहा है तो वो यूसीसी पे जवाब दे रहे हैं। देश की जनता जब पूछ रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग आज कहां खड़े हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी यूसीसी पे जवाब दे रहे हैं। एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते।
ओवैसी कह रहा है कि आपके प्रधानमंत्री को संविधान का ध्यान रख के सारा काम करना चाहिए, यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? ये हिंदू राष्ट्र के लिए। वो संविधान के तहत ही बोल रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं ये सेक्शन 44 में जो आर्टिकल है वो भी पढ़ लेना चाहिए ना, संविधान के तहत। ये हिंदू सिविल कोड है, यूनिफॉर्म आप सिविल कोड नहीं है। 44 जो आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या जरूरत है सरकार को अचानक ये लाने की, ये पूछ रहा है विपक्ष। ऐसी क्या जरूरत है? वो कह रहा है आपके पास मुद्दे नहीं है 24 में, इसलिए आप ये सब लेके आए हैं। देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम सब बताएंगे। क्या मैम अब यूसीसी पर आगे सरकार बढ़ने की बात कर रही है? देखिए, हम तो पिछले 9 साल में यही कह रहे हैं कि हम लोग वायदों से डिलीवरी की ओर, यानी प्रॉमिसेस टू डिलीवरी का जो रास्ता है वो तय कर रहे हैं। और हमारा वायदा था 370 हटाने का, जिसको हमने पूरा किया। हमारा वायदा था 3 तलाक हटाने का, जिसको हमने पूरा किया। हमारा वायदा था राम मंदिर बनाने का, जिसको हमने पूरा किया। और हमारा वायदा था देश के अंदर समान नागरिक संहिता लाने का। अब उसकी तरफ भी बढ़ना ही है। जो जो चीजें बचेंगी एक एक करके उन सबको समाप्त करना ही है। You know, he has spoken about UCC, that laws cannot be different for the same family, have to be same for everybody, and there cannot be a different law for a different person, same person in the family. How do you see that? See, it's too early to talk about UCC. If something comes in the parliament, if something is seriously taken to a level where probably my party, the working committee, the political affairs committee or the party will decide how to respond to that. As of now, it is just people talking about, and obviously Jammu and Kashmir being a Muslim majority state, we will not agree to that. पूरी तरह से कांग्रेस को टारगेट किया है, ऑपोजिशन यूनिटी को टारगेट किया है, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। मुसलमानों को जो बहका रहे हैं वो मुसलमानों को समझना चाहिए। इस पे आपकी रिएक्शन? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के संविधान से तो बड़े हैं नहीं, या संविधान की मालूमात अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं हो तो संविधान की जो जो व्यवस्थाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है उसको एक बार समझ लेना चाहिए। हमारे देश में व्यक्ति स्वतंत्र है, सबको है, सबको अपने अपने धर्मों पे प्यार करने का अधिकार है। और ये जो कॉमन सिविल कोड लाने की जो बात करते हैं तो इस पर इसका ड्रॉप तो एक बार बाहर आना चाहिए। अभी भी ड्रॉप बाहर नहीं आया है। इसको कई कायदेतंत्रों ने उसका विरोध किया है। एक बार ड्रॉप आने दीजिए। प्रधानमंत्री जी को हमारी इतनी ही विनती है कि हम किसी को नहीं बहका रहे हैं। लोग समझदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझता है। तुम्हारी मानसिकता क्या है ये लोगों को पहले ही पता चल जाती है और उसके आधार पर लोग अपनी भावना बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का ड्रॉप पहले बाहर देना चाहिए और बाद में प्रधानमंत्री ने चर्चा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भोपाल में यूसीसी पर जिक्र करते हुए कहा है कि एक ही परिवार में अलग अलग कानून अगर होंगे तो कैसे परिवार को या देश को चलाने में आसानी होगी, मुश्किलात की वो जिक्र कर रहे थे। चूंकि आप पक्ष रखते रहते हैं मुसलमानों का इतलाज, आप कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, अभी जिस तरह से लॉ कमीशन ने भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसमें 1 महीने का समय दिया है कि अगर किसी को स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हैं, वो इस पर आके अपनी राय रखें। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात जो कही है, मुझे लगता है कि देखिए चर्चा तो होनी चाहिए। अफसोस ये है कि किसी भी इस तरह की जो विषय होते हैं उस पर राजनीति हो जाती है और राजनीति होने की वजह से फिर वो सारा मुद्दा राजनीतिकरण हो जाता है, फिर उसका मसले का हल नहीं हो पाता। जो कानून लाना भी चाहते हैं तो इसका एक ड्राफ्ट होना चाहिए, ड्राफ्ट बने और ड्राफ्ट तमाम जितनी भी धर्म है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पंथ हैं या जितने भी ट्राइब्स हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। Mr. Baby, the Prime Minister has spoken on Uniform Civil Code and he has said that if there is different rule for different members of a family, then is it possible to run the family? The Prime Minister who speaks about Uniform Civil Code, will he courageously implement uniform entry of people belonging to every caste in temples of North India? So-called
scheduled caste, scheduled tribe people, if they go anywhere near the temple, they are burned out. We all want equality of women before law, even rights on the assets of their parents. There are differences in different communities and religions. Based on the SC order that they are implementing UCC. How does the DMK react to this? See, nobody is talking in favor of Muslims. They are talking for their religion. No political party wants to separate Muslims and speak for them. There is one political party which is against Muslims. That is BJP. Why should they be against Muslims? They are choosing Muslims because of vote bank. They are attacking Muslims because of vote bank. Who is running vote bank politics? And Modi doesn't know politics. We are the citizens of this country. Modi is the servant of the people who have elected him. He has to serve the people. He cannot command the people. He is not a king, he is not a monarch. Just by holding a spectre for 10 minutes while walking, he cannot become a king. What is this? The constitution says, the fundamental rights say that people have, every citizen has the right to follow any religion. It is the constitution, Article 25. If you have not read the constitution, let him go back to the constitution, take the book, or ask some professor or lecturer, law lecturer, to explain as to what Article 25 says. Shifting focus down south to very different story now. After the power tariff hike in Karnataka, Bangalore Water Supply and Sewerage Board plans to hike the water tariff as well. Now, the step will be taken to overcome their burden of high electricity bill. Now, as per the board, since electricity bill is likely to increase by 15 crore per month, the only viable option they have right now is to increase water tariff as well. Now, the board further said that increasing the water tariff will also improve its revenue collection. Remember, the Siddaramaiah government is already receiving criticism from the opposition over the increase in electricity tariff. The trade industry body Karnataka Chamber of Commerce and Industry even staged a rally against high power tariff against the hike. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೇಟ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 3 ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಕೆಹಳ್ಳಿ, ಆರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನೀರು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಯಾವ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಂಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿಂದ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತನೋ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದರೆ. What does this mean? This means that any normal consumer who is consuming water will have to pay FT price now. Meaning to say, my life is going to get costlier. I'm already paying instead of 7 rupees, 14 rupees in electricity, and for water, what is coming as 40 paisa will be 1 rupee plus. Congress has given only freebies in 3 components and taken away the 30 components. Shifting focus to all that discussion around sedition law now, amid a clamour for the colonial-era sedition law to be repealed, Law Commission Chairman Justice Ritu Raj Awasthi on Tuesday said that the present situation from Kashmir to Kerala and Punjab to Northeast makes it must to retain the law to safeguard the unity and integrity of India. Defending the panel's recommendation to retain the law, he further said that sedition law, being a colonial legacy, is not a valid ground to repeal it, as several countries have similar laws. Now, regarding special laws such as the Unlawful Activities Prevention Law and the National Security Act, Justice Awasthi said that these laws do not cover the offence of sedition, and therefore the specific law on sedition needs to be there too. There is a raging, ongoing debate as to whether sedition law is necessary
for Indian society in these days. The only matter to be understood is that sedition law may be justified and may be necessary to be in the books of statute to safeguard national integrity, to safeguard the national interest. But what is important is that if the law is misused, because what has been experienced during the past few years during the current rule is that anyone who criticizes the government is deemed to be criticizing the nation. CNN News 18's Anusha Soni spoke exclusively to senior lawyer Mahesh Jethmalani on the sedition law. Let's listen in. Well, you know, sedition law is not a terrorism. There's a subtle distinction between terrorism and, sedition. In other words, 124A and, terrorist activity. Terrorist activity requires, a certain kind of intent to overawe the government and intent to create terror among the people. And it requires, violence. It requires some kind of mass, either to blackmail the state or to create terror and to take innocent lives for either ideological purposes or anti-national purposes. So, whereas sedition is bringing the state into disaffection, not by violence necessarily, right, but even by instigation, and you are sort of instigating people, say, for the army to mutiny, right? Or any of the police forces to undermine the police force, somehow or the other to shake the security of the state, right? And not as drastic as terror, right? But a step short of that. And I think that the way you weaken a state is not necessarily only by terrorist activity, but also by the kind of false propaganda and the division you create within society. You create fault lines within society, Hindu, Muslim, caste, etc., right? When you're doing it to destabilize the state, I think 124A is called for. Moving on, in a fresh twist to Uttar Pradesh Madrasa Rao, at least 20 madrasas located along the Indo-Nepal border have come under scrutiny by the Minority Ministry of the Uttar Pradesh government. It's been suspected that these madrasas are attempting to alter the demographics of the area. According to Minority Affairs Minister Dharmpal Singh, the preliminary survey of the madrasas report indicates suspicious funding. The ministry has ordered a further investigation into these approximately 20 madrasas, and if any wrongdoing is discovered during this survey, necessary actions will be taken. Meanwhile, Samajwadi Party has hit out at the BJP expectedly, claiming that the BJP engages in nothing but divisive politics. लगभग 20 मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच आप एक बार फिर से करवा रहे हैं, क्या-क्या शिकायतें आई? योगी सरकार की प्राथमिकता है मदरसा शिक्षा भी बेहतर हो। बेहतर शिक्षा के लिए हम बेहतर सिस्टम को भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम एनसीईआरटी का कोर्स भी लागू किया है और उन्हें आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए भी कुछ सिस्टम डेवलप किए हैं। इसके बाद भी पहले एक सर्वे कराई थी, सर्वे में कुछ संदेह हुआ कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे स्थित हैं उनकी फंडिंग रिपोर्ट संदेहात्मक थी। वो रिपोर्ट में ये तथ्य निकल कर आए कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो मैनेजमेंट ने प्रॉपर वे में बताने का काम किया कि फंडिंग हमें स्थानीय स्तर पर ज़कात चंदे से होती है, जिसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को देखने पर वहाँ ये जानकारी में आया कि रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो चंदा ज़कात कर सकें और कुछ धन का सहयोग मदरसों को दे सकें।
The lack of awareness around menstruation and poor sanitation infrastructure can undermine the educational opportunities and health of girls in India. Here's a special report on how Reckitt, a leading hygiene, health and nutrition brand, is working towards a future where no girl is held back because she menstruates. Take a look. A natural biological process like menstruation can become a terrifying experience for girls due to lack of awareness and access to adequate sanitation facilities. Making significant efforts to enable girls to practice safe menstrual hygiene is Harpic, which aims to impact 15 million students through its sanitation curriculum. Our vision for 2030 is we are seeing a world where no woman or girl is held back because she menstruates, where everyone can access the menstrual products of their choice. Period stigma is a history. Everyone has basic information about menstruation and how to manage it. Everyone has access to period-friendly sanitation facilities. Hence, we have partners like Gramalya who have very rich experience on working on the subjects like this. We also think like the information and the curriculum and the delivery mechanism should be science-based and should be science-led. Like we are coming up with a very interesting character of KK Kitanu, which we will be launching with Network 18 soon. And the second interesting nudge what we are using here is something called Neela Jadugar. So we are coming up with a very, very small short stories. We're coming with the STEM education tools for the girls so that they own this whole agenda. They are in the driving seat. Safe and effective menstrual hygiene management is one of the focus areas for Mission Swachhata or PANI, through which News18 Network and Harpic are advocating for better sanitation and clean toilets across the country. It's time for a short commercial break, but we'll continue to bring you more news and updates on the other side, so stay with us. He's got to now take the bull by the horn, right? Yeah. No matter what the criticism is, right? Ultimately, it is going to be debated. It's not going to be forced down anybody. It's going to be debated. Everybody will see the rights and wrongs of anything that's being done. Absolutely. My last question to you pertaining to UCC is that the present government, Modi government, has had 2 terms and it has been a very emphatic mandate. In fact, this government has been very assertive about the legal or the constitutional changes that they wanted to bring, say, this abrogation of Article 370 and various other legislative and legal measures that they have taken. Why do you think UCC has not been a reality so far? And in your understanding, the UCC, bringing of UCC and making it a reality, would it be one stroke of a statute, or would we require a series of legislative methods and statutes to make it a reality in India? Well, I think the delay is because out of, although Article 370 was contentious, right, it was really contentious only, for people in Jammu and Kashmir, and particularly vested interests in Jammu and Kashmir. But this, given the diversity of Indian society, particularly the religious diversity and to some extent the caste diversity, which would be affected by any legislation on uniform civil code, right? This had to be carefully considered, sorted, and there's been a simmering debate going on even in the courts for a long time. Right. And aspects of it, for instance, the hijab issue, triple talaq, all the nikah halal, which is pending right now. All these, had we had a uniform civil code in place, there wouldn't have been so much time taken in the courts for all these, issues, frankly. So I think, just one strong reason also for doing this is that, we are cluttering the court with issues, of social life, which could be resolved at one stroke of a statute, by one statute. The courts don't need to decide what is written in Quran or in Gita, and perhaps this is a job which is best left to the legislature. So, thank you so much for sharing your thoughts as far as Uniform Civil Code is concerned, and I'm sure this is going to be a very intriguing debate.
Well, joining us on the broadcast is another special guest. We have Mr. Mahesh Jethmalani, who's a member of Rajya Sabha and also a senior advocate at the Supreme Court. Thank you, Mr. Jethmalani, for speaking with us and joining us on the show tonight. Today, we talk about a very important issue, the Uniform Civil Code. I'm sure you're aware the Prime Minister has spoken on this issue, and he says in one family, there can't be two sets of laws. The set of laws, even the personal laws, need to be uniform in this country. I just want to understand from you, there are various criticisms when we talk about a uniform civil code. There's the argument of diversity, there's the argument of timing, the right politics and posturing. How do you see this as a student of law? Is the time ripe and correct for us to have a UCC? Well, diversity is undoubtedly a good value. But the point of the matter is diversity. Welcome back and thanks for staying with us. Our next story is certainly a good one. Now, Kashmir's bat industry is set to get recognition in the upcoming ODI World Cup when 6 countries, including Afghanistan, UAE, Sri Lanka, Oman, West Indies and Bangladesh will use the Made in Kashmir willow. This is seen as a new dawn for the bat industry in the valley, which has been manufacturing them for decades now. CNN News 18's Isha Anwani with this ground report. Check this out. Kashmir's willow is famous all over India. It's producing quality cricket bats for several decades. It hasn't gotten any international recognition, but now there will be 6 international World Cup playing nations who will be using bats manufactured in Kashmir. Now, this has brought joy on the faces of those who are manufacturing bats and have been manufacturing them, in fact, from the 1920s. Many of them have been sending these bats without any labels to outside markets, but now it will have its own label, own manufacturing in Kashmir, and it is something which has brought a joy on the faces of those who have been producing bats from Kashmir and sending them to not only India but outside world as well. My name is Fawzul Kabir and I am the owner of Great Sports Private Limited Kashmir. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कश्मीर में जो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है, खुशी की बात ये है, मसरत की बात ये है दैट वी हैड मेड नाउ डेब्यू इन द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट. और कल हमारा बैट जो कि हमारी जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स चल रहे हैं अभी, जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप है जो इंडिया में खेला जा रहा है, उसके लिए हमने कल डेब्यू कर लिया वनडे में पहली बार. अगर आप अब इस पूरी क्रिकेट की सनत को देखेंगे, वी आर मेकिंग क्रिकेट बैट्स इन कश्मीर सिंस 1920. Well, that's all from me for now, but we'll continue to bring you more news and updates on the other side. Thanks for watching.